all marketing starts from consumer insights. So आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे आप फोन बेच रहे हो या टेलीकॉम की सर्विस बेच रहे हो या आप कोई एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हो, कंज्यूमर का क्या एक्सपेक्टेशन है या कंज्यूमर का क्या नीड गैप है जिसको आप फिल कर रहे हो, आपका ब्रांड एज वेल एज आपका प्रोडक्ट, एंड दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. प्रोडक्ट इज द एक्चुअल फैक्चुअल थिंग एंड ब्रांड इज अ प्रोडक्ट प्लस प्लस, राइट? इट्स द परसेप्शन एज वेल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर की लाइफ में वो क्या गैप है जो आपका प्रोडक्ट फिल करेगा और वो क्या गैप है जो आपका ब्रांड फिल करेगा. Hello folks, welcome to the series named The Placement Guide, where we help students to know about different career opportunities. Today, we have a very special guest amongst us, whose name is Aditi Anand. She is currently working in Coca Cola as Creative Strategy Head and has 15 years of experience in marketing in top companies like Airtel, Flipkart, Nokia Mobiles, etc. She has also won various awards for her innovative marketing ideas and was selected into LinkedIn Top Voice 2022. She has done her higher education from the University of Chicago Booth School of Business. Thank you so much, Aditi, for accepting our invitation and coming up to the show. My pleasure. Really happy to be here. Before we proceed, do like and share this video. Also, don't forget to subscribe the channel for more such videos. Let's deep dive into your journey, Aditi. So, how did you develop your interest towards marketing space? Actually, when I joined the B school, my first MBA is from IMT Ghaziabad. उस समय मुझे as such कुछ idea नहीं था कि मुझे कौन सी field में MBA करना है. And being a science graduate and a computers major, बिल्कुल भी पता नहीं था कि different career options MBA के अंदर क्या निकल सकते हैं, HR क्या होता है, marketing क्या होता है, finance क्या होता है, operations क्या होता है. And I thought, let me join this and let me read and study all the subjects and then I will know what I want to do. So I joined thinking कि मैं HR करूंगी because मुझे लगा HR में काफी ज्ञानबाजी होगी, ऐसा कुछ खास उसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है. But in the first year of your MBA, you actually go through all subjects. So operations पढ़ते हैं, finance पढ़ते हैं, IT पढ़ते हैं, marketing पढ़ते हैं, HR पढ़ते हैं. And by the first year, by the end of the first year, I was actually pretty clear that marketing is what interested me the most because I thought it had a good combination of analytics as well as creativity. So आपका left side of the brain भी use होता है, आपका right side of the brain भी use होता है. And I thought that was something that was perfect for me because I had grown up doing science, so numbers and maths and logic was like imbibed in my system. And creativity, I think it's in my genes. My parents are both in creative professions. So I was always as a child also writing poems, writing stories, participating in all kind of activities. So it was a good mix of creativity and numbers. And that's what really impressed and interested me. And when I studied the subjects, I knew that this is what I wanted to do. Yeah, that's a really nice journey from science to HR to marketing field. I think a lot of science students has never thought of getting into marketing or even into the finance field coming from the science background. Yeah, I mean, yes and no, because in any MBA school, if you see, a lot of the people are actually with engineering background. So लोग engineering करते हैं और उसके बाद I think somewhere in the 4 years they realize कि ये तो ना हो पाएगी, तो चलो अब MBA कर लेते हैं. It's also, you get more managerial positions, you get better salaries, starting salaries, your career trajectory is better if you do a master's. So either you do a master's in your, like you do an MTech or you do like an MBA. So I think more than 60% of my batch were actually engineers. So I wouldn't say that, but yeah, very few of them, I would say, took marketing. बहुत सारे लोगों ने finance में या IT में major किया था because it was a more seamless fit for them. But we had a lot of engineers in our batch. Yeah, I can completely relate with this part. Even I am also from engineering background and currently in my 4th year. And मेरा भी यही plan है कि आगे जाके MBA करने का. So completely relate with this. So what was your biggest learning experience at University of Chicago Booth School of Business? So University of Chicago Booth School of Business was a very different experience. So it was not like a normal MBA program for early
people who've just entered the jobs, or for mid-career people. This program, which was called Accelerated Development Program, was for senior level people. So it was people who are, minimum 12 to 15 years of experience, who are CXO levels, who have high responsibilities, who are leading functions, basically like marketing function, finance functions, head level pe jo log hote hain. So it had a very interesting mix of people from various industries as well as countries, because this was a global cohort. So हमारे बैच में साउथ अफ्रीका से लोग थे, यूएसए से लोग थे, लंदन से लोग थे, लैटिन अमेरिका से लोग थे, सिंगापुर से लोग थे, and of course इंडिया से लोग थे. And people were from like there were people who were operation heads, people who were supply chain heads, people who were finance heads, people who were also HR. Like we had like one HR head of a company. I think that the difference was twofold. One is कि जब आप इतने सारे सीनियर लोगों के साथ जो इतने डिफरेंट वर्क एनवायरनमेंट्स, कंट्रीज, इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, तो जो एक्सपीरियंस शेयरिंग, पीयर टू पीयर लर्निंग होती है, वो फिनोमिनल होती है. बिकॉज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट यू गेट ऑन द जॉब, दैट इज अनपैरेलल्ड. नो स्कूल कैन टीच यू दैट एक्सपीरियंस. सो वो लर्निंग शेयरिंग, experience sharing, how someone else is looking at a problem, what is their approach to solving a problem, what versus how you are thinking, there's a lot of information sharing that happens there, and you learn from your peers. That is one thing which was very different. The second thing which was very different was that the teaching methodology and the faculty, I mean, world class in Chicago Booth School. I have done my first MBA from India, so I do have a parallel to make, like how we teach here versus how they taught there. So a lot of insight into new management thinking, new frameworks. The difference was that जो प्रोफेसर्स हमें पढ़ा रहे थे, वो जो केस स्टडीज से पढ़ा रहे थे, वो केस स्टडी उन्होंने खुद, वो उस केस स्टडी का पार्ट थे. लाइक दे वर कॉल्ड इन एज कंसल्टेंट्स एंड दे लिव्ड दैट बिजनेस प्रॉब्लम एंड दे सॉल्व्ड दैट बिजनेस प्रॉब्लम, एंड देयरफॉर दे वर शेयरिंग वेरी फर्स्ट हैंड इनसाइट्स. वर्सेस नॉर्मल बी स्कूल करिकुलम में बहुत पुरानी डेटेड हार्वर्ड की केस स्टडीज होती है, जो 1960 में हुई थी, 1990 में हुई थी, जो अब रेलेवेंट नहीं है बिकॉज मार्केट हैज चेंज्ड कंप्लीटली. So it was very relevant. There were courses on entrepreneurship, startup, when should you start up, when should a startup go from 0 to 1. It was very relevant, it was very contemporary, and it was being taught by people. It was not theoretical because that had been implemented by them. So real life problems by people who had implemented those solutions in those companies. So it was very, very enriching versus a normal MBA. Yeah, it seems really a very nice and wholesome experience by interacting with people from various countries, various backgrounds. Like इतने सारे लोगों से मिलके कितना सारा उनके experience से सीखने को मिला होगा. Absolutely, absolutely. Beyond a point in life, I think एक point तक classroom learning is very important. पर एक point के बाद actually peer learning बहुत important हो जाती है, because हर किसी के पास wealth of experience और knowledge है. And if you are in an environment जहाँ पे हर कोई talented है, तो आप दूसरा जना कैसे सोच रहा है, कैसे problem solve कर रहा है, उसके क्या experiences रहे हैं, वो experience sharing से बहुत ज़्यादा learning होती है beyond a point. Yeah, that's very true. I think there is a very famous quote that you are the average of the 5 people that you are most in touch with. So this definitely applies here. Yeah, it does. So which skills were helpful to you in your work role earlier at Airtel, Flipkart and Nokia Mobiles? I think it actually depends, because B schools में आपको एक knowledge मिल जाती है, basic frameworks, एक thinking process आप सीख जाते हैं. बट उसके अलावा आई थिंक आज जो हमारा बी स्कूल करिकुलम है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स स्टिल द सेम, it does not really prepare you for real life problems. So you learn the theory, but the practical skills and how you implement them, वो आपको जॉब पे ही सीखने पड़ते हैं.
I think the most important attitude or soft skills I would say in the early years of life is persevere, because बी स्कूल का जो करिकुलम होता है, जो एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी होती है, जो 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 रिगरस प्रोसेस होता है इवन टू गेट इन एंड देन टू सस्टेन, they prepare you for long hours, they prepare you for taking pressure, they prepare you for like short deadlines कि आज पढ़ाया, कल एक हफ्ते में प्रेजेंटेशन दो, जब 4 प्रेजेंटेशंस आपको ऑलरेडी देनी है, एंड इट इज डिजाइन्ड इन अ वे सो दैट आप प्रिपेयर हो सके. रियल लाइफ में भी ऐसे ही डेडलाइंस मिलते हैं, सो थोड़ा बहुत वो उसके लिए प्रिपेयर कर देते हैं, बट बाकी यू हैव टू लाइक just really stick it out on the job, persevere, and the first 5 years should only be focused on learning. So काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो शुरू के 5 साल में एंजॉयमेंट या फुलफिलमेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं, या खुशी जॉब. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लर्निंग को प्रायोरिटाइज करें, बिकॉज अगर आपने अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ली पहले 5 सालों में, तो फिर उसके बाद आपका करियर एंड कहाँ तक आप जाओगे, आपकी करियर ट्रैजेक्टरी कितनी दूर जाती है, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है. अगर आपकी फाउंडेशन वीक है तो आपका करियर शुरू में आपका हो सकता है आपको क्विक सक्सेस मिल जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन थोड़ा सा स्लो हो जाओगे. सो इट बैलेंसेस आउट बेसिकली. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द फर्स्ट 5 years. Yeah, that's very helpful advice that you shared, to focus more on the learnings, and eventually earnings and other things will automatically come after some years. So can you tell something about your current work role at the Coca Cola Company, which uses some of the best marketing strategies in the world? Yes, it does. And I also joined Coca Cola a year back, so I was also equally fascinated with Coca Cola. And क्या करता है Coca Cola ऐसा, because as we know it's a world renowned brand, it's the most recognizable brand in the world. And मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्या डिफरेंट मार्केटिंग करते हैं. मेरा रोल यहाँ पे कंज्यूमर स्ट्रैटेजी रोल है. सो जो भी इंटरफेस या जो भी कम्युनिकेशन आपको कोका कोला एज अ ब्रांड से मिलता है, चाहे वो एक टीवी एड हो, चाहे वो एक कोक स्टूडियो की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो एक पोस्टर हो दुकान में, चाहे वो एक एक्टिवेशन सेटअप हो, कोई वेंडिंग मशीन लगी हो, बेसिकली कंज्यूमर कोका कोला को कैसे रिसीव करेगा एज अ ब्रांड, नॉट एज अ प्रोडक्ट बट एज अ ब्रांड, कोका कोला को कैसे रिसीव करेगा, that is my role. And in this role I work very closely with my global team, because Coca Cola is a global company. So I work very closely with the global team to create that blueprint and that execution plan ki Coca Cola kaise dikhna chahiye. Also because it's a global brand, and आप कोका कोला से इंडिया में मिलो या लैटिन अमेरिका में मिलो, आपका एक्सपीरियंस सेम होना चाहिए, बिकॉज ये एक ही ब्रांड है, ये डिफरेंट पर्सनालिटीज नहीं हो सकते ब्रांड के. So we also work very closely with other countries to ensure that it's the same brand experience across the world, whether you are in Latin America or South Africa or Bangladesh, आपको same brand experience मिले. तो वो brand experience आपका क्या हो, what like ब्रांड आपसे क्या कह रहा है, जब आप ब्रांड से बात कर रहे हो तो वो आपको कैसे जवाब दे रहा है, जब आप किसी दुकान में जा रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर आप डिजिटल पर हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बात कर रहा है तो वो क्या बात कर रहा है. इट्स बेसिकली टू डू हाउ अ कंज्यूमर विल रिसीव द ब्रांड. That's really very interesting work role. And like we have seen in so many ads of Coca Cola, that they never say that they are selling world ki best drink or best taste, but they always say that they are providing the best feelings to the customers, and it really stands out throughout the marketing campaigns of Coca Cola for many decades. Yeah, the best drink is a claim that you can factually not make, क्योंकि जो मेरे लिए बेस्ट है वो हो सकता है आपके लिए बेस्ट ना हो. बेस्ट बहुत ही सब्जेक्टिव है, तो कभी भी आप ये नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकता. इवन अ चॉकलेट ब्रांड और अ नूडल्स ब्रांड विल नॉट से कि मैं आपको बेस्ट नूडल एक्सपीरियंस या बेस्ट मिठाई या चॉकलेट एक्सपीरियंस दे रहा हूँ. वो आप नहीं, वो दैट इज फॉर द कंज्यूमर टू डिसाइड. व्हाट वी कैन से इज, इसे पीकर आपका क्या होगा, आपको कैसा लगेगा, व्हाट विल यू फील, व्हाट विल इट डू फॉर यू. That is what we can say, and that is what we focus on, कि कंज्यूमर को क्या टोटल वैल्यू क्या मिलेगी, टोटल बेनिफिट क्या मिलेगा, टोटल फीलिंग क्या मिलेगी. That's what we can say. We can't really claim कि it's the best taste in the world.
So can you tell how do you use consumer insights to develop good marketing strategies with some examples? See, it depends. All marketing starts from consumer insights. So आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे आप फोन बेच रहे हो या टेलीकॉम की सर्विस बेच रहे हो या आप कोई एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हो, कंज्यूमर का क्या एक्सपेक्टेशन है या कंज्यूमर का क्या नीड गैप है जिसको आप फिल कर रहे हो, आपका ब्रांड एज वेल एज आपका प्रोडक्ट, एंड दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. प्रोडक्ट is the actual factual thing, and brand is a product plus, right? It's the perception as well. So you need to understand कि कंज्यूमर की लाइफ में वो क्या गैप है जो आपका प्रोडक्ट फिल करेगा और वो क्या गैप है जो आपका ब्रांड फिल करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मोबाइल फोन बेच रही हूँ तो through my consumer research and consumer insighting process, I will realize that currently consumer की life में having a good selfie camera or a good camera that can take photographs in low light, let's say hypothetically, is a need gap. क्योंकि इस price point पे कोई भी consumer को आज एक अच्छा selfie camera या low light camera नहीं दे रहा. So this is the functional need जो मेरा प्रोडक्ट फुलफिल करेगा, मेरा फोन फुलफिल करेगा. देन यू हैव टू गो स्टेप फर्दर. क्यों कंज्यूमर अच्छी फोटो लेना चाहता है लो लाइट में? अच्छी फोटो आएगी तो कंज्यूमर को कैसा लगेगा? व्हाट इज द हाई दैट अ गुड फोटोग्राफ गिव्स द कंज्यूमर? इसलिए क्योंकि अच्छी फोटो आने से हमें अपनी सेल्फ वर्थ ज्यादा अच्छी लगती है, या इसलिए क्योंकि मैं शायद प्रोबेबली एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूं और मैं रात में जाके नाइट सिटी कवर करती हूँ और मेरे को इसलिए अच्छी क्वालिटी का कैमरा चाहिए, या फिर इसलिए क्योंकि एक एक्सपेंसिव लुकिंग कैमरा फोन से मेरी प्रेस्टीज और मेरी वैल्यू बढ़ती है, लोग समझते हैं कि आई एम डूइंग रियली वेल इन लाइफ, इट्स गुड फॉर माय सेल्फ इमेज. व्हाट इज द रीजन? एंड दैट्स द रोल दैट द ब्रांड प्लेज. फंक्शनली तो आपने प्रोडक्ट दे दिया, एंड इफ वी वर ऑल टू प्ले ऑन अ फंक्शनल, तो I mean, it's just product A versus product B versus product C. So you have to then go a step further and see कि from an emotional point of view, जो product आप consumer को दे रहे हो या जो need gap आप fill कर रहे हो, brand का क्या role है उसमें, and then you ladder it up with that emotional benefit, whether it makes me look good, it increases my self-worth, it helps me create content, makes me a good content creator because I can post content on social, whatever it is. And that's how you kind of develop from a need gap to a product benefit and then to a brand benefit, and then you put it out. Yeah, that's a really very amazing example that you said, like understanding the difference between the brand and the product, and then asking the questions like why, how, when, like the second and third order levels of thinking, and that's how every good brand and products are being sold and developed. So what is your biggest observation and learning related to marketing based on your 15 years of rich experience? I think marketing has changed tremendously in the last 15 years, and that is because it's a natural evolution. When we started out, I mean, a lot of people would have heard about marketing 1.0, which was product manufacturing, product speak. Then it was 2.0, which was probably consumer speak. And aise kar ke marketing keeps evolving. I think what has happened in the last 15 years is that, and especially from an India context, our average age of consumer has come down. So पहले हम लोग 30 प्लस को मार्केट करते थे, और फिर हम लोग 20 प्लस को मार्केट करते थे, फिर हम 18 प्लस को मार्केट करते थे, और अब लार्जली जो सारी ब्रांड्स हैं वो टीन्स और जेनजी को मार्केट कर रही हैं. सो एक तो एवरेज एज ऑफ कंज्यूमर्स इज कमिंग डाउन. सेकंड, देयर इज एन एक्सप्लोजन ऑफ internet and digital maturity has happened. So no youngster today is watching television, nobody is listening to the radio, nobody is reading the newspaper. सब कुछ आपके फोन पर है और सब कुछ आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो. So basically जो पहले हम एक फिल्म बनाते थे जो एक पूरे साल टीवी पे चलेगी, या फिर सिनेमा के लिए एक बड़ा सा हमने फिल्म बनाया, आई थिंक वो सारा कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है, बिकॉज कंज्यूमर एंड स्पेशली यंग कंज्यूमर्स टीवी सिनेमा एक्सेट्रा नहीं देख रहे हैं, वो डिजिटल पर हैं. सो यू हैव टू be digital friendly and you have to have a digital first marketing strategy. Then there are a lot of other complications that have come in because consumers have become more demanding. एक टाइम था जब
रात के 8 बजे रामायण आएगी या सुबह के 11 बजे चित्रहार आएगा, और सब लोग अपना सब काम छोड़ के उस टाइम पे रेडी रहते थे, और इसलिए एडवर्टाइजर्स भी उसी टाइम पर अपने एड्स डालते थे। अभी वैसा नहीं है, अभी अपॉइंटमेंट व्यूइंग का जमाना चला गया और ऑन डिमांड व्यूइंग का जमाना आ गया। आपको बिंज करोगे आप अपना एक पूरा सीजन नेटफ्लिक्स के ऊपर, आपको जब जो एपिसोड या जब जो गाना सुनना है तब आप वो सुनेंगे या देखेंगे। बेसिकली पावर इज विद द कंज्यूमर, कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि वो ब्रांड से कब इंटरैक्ट करेगा और कब उसके पास टाइम है, वर्सेस द ब्रांड डिसाइडिंग कि मैं चित्रहार में अपने ऐड लगाऊंगी क्योंकि उसी दिन सब लोग आ जाएंगे। सो दैट हैज अ ह्यूज implication because now consumer has the power and they also have the power to scroll through your ad or to skip your video, which was not possible earlier on television. So आपका communication should be that much more impactful. You should need to have those many more pieces of communication, and you need to be far more agile and real time than you were in the earlier era. That's a big change that has happened. Yeah, that's a very nice observation that you shared. Like पहले कंपनी के पास ज्यादा मतलब पावर रहता था कि किस तरीका से उन्हें मार्केटिंग का कैंपेन स्टार्ट करना है, कब किस टाइम पे करना है और किस तरीका से सब कुछ करना है। पर अब ये पूरी तरह कस्टमर ओरिएंटेड हो गया है। So one really needs to keep updated with the new changes, new trends. You actually have to drive the new changes and new trends. जो आइकॉनिक ब्रांड्स होती हैं, जो वर्ल्ड लीडर ब्रांड्स होती हैं, वो चेंजेस को शेप और डिफाइन करती हैं। फिर जो नेक्स्ट सेट ऑफ ब्रांड्स होती हैं वो अपडेटेड रह के उनको फॉलो करती हैं, और जो थोड़ा सा लैगर्ड ब्रांड्स होती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका मार्केट शेयर गिर जाता है, उनका ब्रांड वैल्यू गिर जाता है, वो दे फेल टू रिकॉग्नाइज द ट्रेंड एंड दे स्टिल डू ओल्ड स्कूल मार्केटिंग, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन दे लूज मार्केट शेयर, दे लूज कंज्यूमर रेलेवेंस, एंड देन दे इवेंचुअली डाई. So that's like a three cohorts in which you can divide brands. Yeah, that's a very nice breakdown that you shared. So according to you, how important is meme, influencer marketing, etc. plays a role in today's world? See, meme and influencer as well as content marketing, these are all new buzzwords. In fact, even community building, I would say, and especially something which a lot of brands are doing successfully, a lot of brands are doing tactically, and some brands are not doing at all. तो जो नहीं कर रहे उनको तो छोड़ देते हैं, I'm sure they have their own reasons, but I think अगर आपका target group youth है, so you have to be relevant to the youth today. और अगर आपके प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अडल्ट डायपर्स बना रहे हो, लेट्स से हाइपोथेटिकली, प्रॉबेबली आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और मीम मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू पीपल हु आर मे बी 60 प्लस 70 प्लस, उनको मीम मार्केटिंग, लॉल और इमोजी और इमोटिकॉन समझ भी नहीं आएगा. सो अगर आप वहां हो, नथिंग रॉन्ग, नथिंग गुड, नथिंग बैड, बट अगर आपका टारगेट कंज्यूमर मीम और इन्फ्लुएंसर और इंटरनेट और सोशल मीडिया पर है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई. बट अगर आप यूथ से बात कर रहे हो आज, टीनेजर से, मिलेनियल से, तो these are important things that you need to have in your marketing strategy, because youth is talking that language. अगर आप उस लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, आप पुराने जमाने में टीवी एड और रेडियो एड ही चला रहे हो, तो you will not be relevant with your consumers. I think it's a good way to be relevant. The only problem is that I don't think any brand today has cracked how to use these new tools strategically. Matlab, you can do one campaign and you can use it tactically and then you can move on. A lot of meme marketing, influencer marketing, content marketing is very tactical still. I think there will come a phase and we should try and elevate it and make it more strategic in the marketing play, because तब होगा जब आपके real results आएंगे. अगर आप एक one off, आज मैंने शिल्पा शेट्टी के साथ या let's say सारा अली खान के साथ या अनन्या पांडे के साथ एक influencer campaign कर लिया, कल मेरा कॉम्पिटिटर उठा के उसी के साथ कर लेगा, परसों तीसरा कुछ उठा के कर लेगा, वो स्टिकीनेस नहीं आएगी फिर, बिकॉज कंज्यूमर इज ऑल्सो कंफ्यूज कि कभी तो वो इस ब्रांड को बेच रही है, फिर 3 महीने बाद दूसरे को बेच रही है, फिर 4 महीने बाद किसी और के बारे में कुछ कह रही है, वो टैक्टिकल हो जाता है. सो यू हैव टू यूज देम अ लिटिल मोर स्ट्रेटेजिकली, और बहुत कम ब्रांड्स एक्चुअली स्ट्रैटेजी की तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मीम मार्केटिंग, इन सबको यूज कर रही है. सो दैट्स अ बिग गैप एंड दैट्स आई थिंक समथिंग दैट वी नीड टू कवर अप as a marketing fraternity in the next 1 or 2 years. Yeah, that's a very nice observation that you shared.
using these new types of marketing strategies in a much more strategic manner in comparison to just simply using them in the form of advertisements and others is really very essential for every marketing company or every marketing department.